this is CVR English and it's time to roll the prime time news hour with me, Anukruti Sharma. Prime Minister Modi ji has stated that the people in Haryana are witnessing this internal conflict within the Congress party, and he noted that the Dalit, the backward and the deprived communities are particularly frustrated. He asserted that the Dalit community has resolved not to be used as pawns in the politics of a father and a son. Exchange program between the Government of Republic of India and the Government of Jamaica for the years 2024-2029. This will be exchanged on the Jamaican side by Honorable Kamina Johnson-Smith, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade, on the Indian side by Shri Pankaj Chaudhary, Minister of State, Minister of Finance. And lastly, we have the exchange of Memorandum of Understanding on Cooperation in Sports between the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and the Ministry of Culture, Gender, Entertainment, Sports, Government of Jamaica. Again, the two ministers, please. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I will now request spokesperson of Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar, good afternoon, Your Excellency, Dr. the Most Honorable Andrew Holness, ONPCMP, Prime Minister of Jamaica, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers and members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellency, प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री होलनेस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं, इसलिए हम इस यात्रा को विशेष महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री होलनेस लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने उनके विचारों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियन क्षेत्र के साथ हमारे एंगेजमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। फ्रेंड्स, भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं: कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है। जमैका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय। Congress leader Jairam Ramesh has alleged that since May 25th of 2023, there have been attempts from Delhi to destabilize the Karnataka government through various investigations by the Income Tax Department, the CBI and the Electorate Department. He described these actions as a strategy to instill fear and labeled them as politics of vengeance and harassment. Ramesh further emphasized that the Congress party will not be intimidated and insisted that any necessary probes should occur, asserting that the truth will ultimately prevail.
he reaffirmed the party's commitment to completing its 5-year mandate and also fulfilling all the promises made to the people of Karnataka. Take a look. Of Siddaramaia's resignation from the BJP. But the Congress senior leader Kolibadi is asking for the resignation from the Siddaramaiah to face the inquiry. What do you say? We have given official statement. The Chief Minister of Karnataka has said in categorical terms that he welcomes an investigation. The Indian National Congress believes and is convinced that this ED action is an action of political vendetta, political revenge, political vengeance on a democratically elected government led by the Chief Minister. That's all I want to say on this. So what's about Kolibadi's statement? Any other questions on this? इसी पर सिद्धारमैया पर जो जमीन का आरोप है, सिद्धारमैया ने साफ-साफ कहा है कि जब ये फाइल उनके पास आई तब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनकार कर दिया था, मेरे परिवार जुड़ा मसला, मैं इस पे कोई फैसला नहीं करूंगा। जब जमीन उन्हें अलॉट होती उस समय बासर और मुंबई की सरकार थी, तो ये आरोप उन पर कैसे, तो उन्हें परिवार को उन्होंने लाभ दिया? तभी तो लगा रहे हैं, तभी तो ईडी ला रहे हैं, तभी तो जो जांच है और इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात उसको नहीं होने दे रहे हैं। जो 1992 में शुरू हुआ, आपको 2 तिथियां जरूरी हैं। 2004 में खरीदा उस भाई ने, 2010 में गिफ्ट किया, और ये 900 और लोगों को इनकी बीवी के साथ एवज में मिले प्लॉट्स। और जब मिले प्लॉट्स तो सरकार दूसरी थी, तो वो जानते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर इसको आगे बढ़ने दिया जाए तो आप आगे बढ़ने को कैसे अवरुद्ध करेंगे, विलंबित करेंगे, विकृत करेंगे, इस तरह से करेंगे, जनादेश इसको लाएंगे ईडी को बीच में, तभी तो हो रहा है ये सब। और कुछ? शुक्रिया। My simple question to Mr. Ravi Shankar Prasad. Why has the globe-trotting non-biological Prime Minister not gone to Manipur since Manipur started burning on the 3rd of May 2023? He has gone to bring peace all over the world. Vishwa Guru, he has become Vishwa Bandhu, everything. So my question to Mr. Ravi Shankar Prasad, I can understand his frustration. Why has the Prime Minister, globe-trotting, non-biological Prime Minister, not found the time nor the inclination to go to Manipur? He's gone to Assam, he's gone to Tripura. Why hasn't he gone to Manipur? The people of Manipur want him to come to Manipur. He's not been there even for a few hours. He's not said anything on Manipur. He's not met the Chief Minister of Manipur. He's not met the political leaders of Manipur. And Manipur is still tense. Normalcy has not returned to Manipur. So this is my simple question to Mr. Ravi. Anand Kumar, who is Bhagalpur's senior superintendent of police, has reported that an explosion in the Khilafat Nagar area has injured 7 children who were playing there. He mentioned that 3 to 4 children suffered minor injuries while 3 others were hospitalized. The Forensic Science Laboratory, or the FSL team, has arrived at the scene now to collect blast materials for examination, which will help to further identify the type of the bomb that was used. Kumar confirmed that a special investigation team, or the SIT, has also been established to investigate this incident and assured that the accused would be apprehended. एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और घटनास्थल का मुआयना बड़े वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है और इसमें एफएसएल की टीम भी यहाँ पे अभी आई थी और उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से पूरे घटनास्थल का मुआयना किया है। कुछ जो मटेरियल एग्जिबिट था उसको वो लोग ले भी गए हैं लैब में जांच करने के लिए
कि किस प्रकार का विस्फोटक था और उसके क्या क्या आयाम थे। और जहाँ पे घटना स्थल है उसका भी हम लोगों ने मुआयना किया है। तो जो इम्पैक्ट है रोड पे कोई गड्ढा या इस टाइप से नहीं है, बहुत वहाँ लग रहा है कि हाँ कोई पटाखा या बम वहाँ पर फूटा हुआ है। तो किस प्रकार का बम था, कितना शक्तिशाली था, वो तो जो एफएसएल की टीम एग्जिबिट ले गई है उसकी जांच से पता चलेगा। और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या क्या इसके कारण थे, और अगर बम का इस्तेमाल हुआ है तो वो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने रखा, इन सभी बिंदुओं पे जांच के लिए और जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। और एसआईटी ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। जल्दी उसके बारे में जो भी एसआईटी की फाइंडिंग रहेगी उसके बारे में भी आपको विस्तार में बता देंगे। कितने बच्चे ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे उसके साथ, जी बम के साथ? अभी जो बताया गया यहाँ पे लोगों के द्वारा कि किसी के घर से कुछ एक सामान ला के बच्चे खेल रहे थे, उसी में विस्फोट हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि एफएसएल की टीम जो यहाँ से घटनास्थल से जो भी मटेरियल एग्जिबिट उनको लेके गए हैं, तो उसकी जांच होगी तो उससे पता चलेगा कि क्या था उसके अंदर। सर, बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कोई राजा नाम का लड़का था जिसने बम दिया। मैंने बताया कि एसआईटी जांच कर रही है पूरे मामले की तह में जाएगी और अगर उसमें जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कुछ घटना ये है कि हबीबपुर थाना अंतर्गत खिलाफत नगर गांव है, यहाँ गली में 7 बच्चे खेल रहे थे। इसी क्रम में एक देसी बम फट गया है जिससे 7 बच्चे जख्मी हो गए हैं, जिससे इलाज हेतु हम लोग अस्पताल भेज दिए हैं और घटनास्थल पर एफएसएल टीम भी पहुंच चुकी है, तो जांच की जा रही है। सिटी एसपी भी पहुंचे हुए हैं और इसमें हम लोग ड्रग स्क्वाड को भी बुलाए हैं। और इससे एक बच्चे एक ही फटा है। कितने बच्चे घायल हैं? 7 बच्चे जख्मी हैं। 7 बच्चे। तो जांच की जाएगी कि बम फटने का कारण क्या है या कि बम कहाँ से आया, इस बिंदु को हम लोग जांच कर रहे हैं। बच्चों के खेलने के क्रम में बम फटा है या फिर जानबूझ से किसी ने फेंका है पूरा? अब ये तो जांच का विषय है कि किससे बम फटा है, लेकिन कोई बच्चे लोग भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं। कोई प्रत्यक्षदर्शी अभी तक नहीं मिले, कोई सामने नहीं आया है। घटनास्थल घर के बाहर है कि घर के अंदर भी है? ये गली में ही है। Union Minister Chirag Paswan has expressed his deep concern over the devastating flood situation in Bihar, describing it as more horrific than in the recent decades. He noted that the floods have severely impacted 12 to 13 districts, exacerbated by conditions in the neighboring country. Paswan has highlighted his recent visit to the Kosi area to assess the situation and expedite the relief efforts. He further stated that their immediate priorities are now to evacuate the affected individuals, provide them with food and shelter relief, and arrange for accommodation for those who have been displaced. देखिए, ये बात तो सत्य है कि जिस तरीके से इस बार एक भयावह परिस्थिति हम लोगों के राज्य के कई जिलों में देखने को मिली है, ये बीते कई दशकों से ज्यादा भयावह है। पड़ोसी देश में जिस तरीके से बाढ़ की वजह से एक विकराल परिस्थिति वहां पे भी बनी है, पर जिसका असर हम लोगों के राज्य बिहार के लगभग 12-13 जिलों में हम लोगों को देखने को मिला, इसी का संज्ञान लेने और ज्यादा से ज्यादा मदद में तीव्रता दिलाने के उद्देश्य से कल से हम लोग कोसी के इलाके में ही हैं। कल रात्रि का प्रवास भी हम लोग का वहीं था और आज भी बाढ़ से प्रभावित कई जगहों का हम लोगों ने जायजा लिया। पहली प्राथमिकता तो ये थी कि जब पानी का स्तर एकदम से बढ़ा, जब बांध खोले गए और एकदम से जब पानी अलग अलग जिलों में घुसने लगा हम लोगों के यहाँ, तो पहली प्राथमिकता इवैक्यूएशन की थी कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। उस भूमिका को निभाने के बाद अभी की प्राथमिकता उनको रिलीफ देने की है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन लोगों को खाने में कठिनाई ना हो, पन्नी ज्यादा से ज्यादा वितरित करवाई जा सके, वैकल्पिक व्यवस्था रहने की कराई जा सके, ये अभी प्राथमिकता है।
आने वाले 1-2 दिनों के बाद अब प्राथमिकता, क्योंकि धीरे धीरे अब जल स्तर कम होता जा रहा है, अब प्राथमिकता हम लोगों की बन जाएगी कि जो मलबा है, जो कीचड़ है, उसको कैसे साफ किया जा सके। कोई मवेशी जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी वजह से कोई महामारी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, साफ सफाई पुनर्वास का कार्य शुरू होगा। ग्रामीणों में, क्योंकि ये यकायक उत्पन्न हुई एक स्थिति थी, ग्रामीणों में इस बात को लेकर भय भी था, चिंताएं भी थी। कई जगह पर इस बात का अनुभव हम लोगों ने भी किया कि चीजों में और हम लोगों को तत्परता लाने की जरूरत है। उसके लिए भी तमाम उचित निर्देश मैं स्वयं वहां पर देकर आया हूं, स्थानीय प्रशासन के साथ भी। आज सुबह भी हम लोगों ने बैठक की, अलग अलग जिलों के डीएम, एसपी, तमाम अधिकारियों के भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। प्रयास ये है कि असुविधा लोगों को कम से कम हो और जल्द उन लोगों का पुनर्वास हो। इस दिशा में अब हम लोग कार्य करेंगे। भाई, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये चिंता उनको स्वयं है और आने वाले दिनों में ये विश्वास मैं केंद्र की तरफ से आप लोगों को दिलाता हूं कि जितने फंड की जरूरत होगी, पुनर्वास की स्थितियों को वापस नॉर्मलसी की ओर लेके जाने के लिए वो तमाम कार्य किए जाएंगे। मेरे प्रधानमंत्री इन तमाम विषयों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हम लोग उनमें से नहीं है जो कि In Karnal, Bharatiya Janata Party's MP Anurag Thakur has accused the Congress party of prioritizing personal and familial interests over public welfare, suggesting they intend to exploit the people of Haryana. He referenced a statement from a Congress MLA about providing one job for every 50 votes, warning that the public should not support a kharchi-parchi sort of a government. Thakur also recalled incidents from the last Himachal Pradesh elections where forms filled out by voters were found to be discarded, alleging that Congress used these forms to gain power while failing to fulfill their promises. He cautioned the people of Haryana to be vigilant against what he described as Congress's motives to exploit the locals. कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, तो कांग्रेस ने तय कर लिया कि हरियाणा वासियों को लूटना है। दूसरे इनके विधायक ने कहा कि 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, 2000 का कोटा मिल गया। यानी कि नौकरियों का कोटा और खर्ची पर्ची की दुकान वापस चलने की शुरुआत होने वाली। क्या हरियाणा के लोग कभी खर्ची पर्ची वाली सरकार लाएंगे? नहीं लाएंगे। जहां तक रही फॉर्म की बात, हिमाचल प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद फॉर्म कूड़ेदान में पाए गए, ढेर लगे हुए थे, जगह जगह बिखरे पड़े थे, और ये वही फॉर्म थे जो कांग्रेस ने भराकर सत्ता पाई और राहुल गांधी फौरन घूमने चले गए। आज तक कोई वायदा पूरा नहीं किया। 1500 रुपए महिलाओं को महीना देने थे, नहीं दिए। 300 यूनिट बिजली के देने थे, नहीं दिए। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। इन्होंने पानी मुफ्त देना था, वो नहीं दिया, ऊपर से सेस लगा दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम तो छोड़ो, पेंशन ही नहीं मिल रही 10-10 तारीख तक, तनख्वाह नहीं मिलती 5 तारीख तक। बिजली पे सेस लगा दिया, पेट्रोल और डीजल के दाम 2 बार बढ़ा दिए। कांग्रेस ने लूट लिया है। और हरियाणा में भी जो फॉर्म भरे हैं, ये फॉर्म भरने का काम है हरियाणा वासियों को लूटने की शुरुआत। हरियाणा वासियों बच के रहना। ये कांग्रेसियों ने हिमाचल में भी ऐसे फर्जी फॉर्म भरवाए थे, सत्ता पाई, ऐसे ही कर्नाटक तेलंगाना में भरे थे और आज तक कुछ नहीं किया, केवल लूटने का काम किया है। अब हरियाणा की जनता लूटेगी नहीं, खर्ची पर्ची की सरकार लाएगी नहीं। राहुल गांधी प्रियंका यहाँ हरियाणा में घूम रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, बहुत सारी चीजों का घोषणा कर रहे हैं। आपके ऊपर कह रहे हैं कि वादा खिलाफी करके मांगों के साथ युवाओं के साथ। यही कांग्रेसी राहुल गांधी जी सांसद थे, इनकी सरकार थी। 10 साल सेना के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, कांग्रेस ने नहीं दी। हरियाणा के जवान शहीद हो गए, यहाँ का नौजवान, इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ के पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन मांगते रहे, इन्होंने 10 साल में नहीं दी। यहाँ के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, वो लड़ाकू विमान मांगते रहे, लेटेस्ट हथियार मांगते रहे, स्नो सूट, स्नो बूट मांगते रहे, कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। कांग्रेस ने अनदेखी की सैनिकों की, और सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते रहे।
चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता गया कांग्रेस की सरकार में, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, 1,20,000 करोड़ रुपया दिया, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, लेटेस्ट हथियार दे दिए, लड़ाकू विमान दे दिए, मेक इन इंडिया फरीदाबाद की ही कंपनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट बना के दे दी। और यही नहीं, हमने सेना को और मजबूत किया है, युवाओं को अग्निपथ योजना में अग्निवीर बनाकर 100% रोजगार की गारंटी, सरकारी नौकरी और 100% पेंशन का वायदा भी मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस यहाँ सरकार बनाने की दावा कर रही है, लेकिन कर्नाटक की उनकी सरकार के मुख्यमंत्री ने किस तरह से ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली, किस तरह से घोटाले में नाम आया। हरियाणा वासियों, एक बात स्पष्ट है, हरियाणा में सरकार थी तो हुड्डा जी ने किसानों की, भोले वाले किसानों की जमीनें हड़पने का काम इनकी सरकार में हुआ, कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, किसानों की जमीनें औने पौने दाम में खरीद ली गई। अब कर्नाटक का देख लीजिए, मुख्यमंत्री की बीवी का घोटाला, मुख्यमंत्री के परिवार का घोटाला, अब ईडी ने वहां पे भी कार्रवाई की और ईडी। Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has announced ambitious plans to transform Rayalaseema into a green energy hub, projecting that the initiative could create a lot of job opportunities for around 750,000 people. That's a big number. Through the development of solar and wind power. The Chief Minister made these remarks during a Gram Sabha at the Punchuladam in the Kurnool district. During this address, Naidu highlighted his government's achievements, declaring a significant increase in the pension amounts from the previous administration's rates. He assured the attendees that the officials would personally deliver these pensions starting on the first day of distribution, reaffirming a commitment to consistent monthly salaries for employees. ఫోన్లో ఆ క్యూఆర్ కోడ్ చూపిస్తే మీ భూమి ఉందో ఎక్కడుందో అక్కడికి నేరుగా వెళ్లిపోయేట్టుగా జీపీఎస్ కూడా పెట్టి, జీఏఎస్ పెట్టి మీకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఇచ్చే బాధ్యత మాదని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇప్పుడే చెప్పా, పింఛన్లు ఇచ్చాం, అన్నా క్యాంటీన్, దుర్మార్గుడు అన్నా క్యాంటీన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేశాడు. ఇప్పటికే 175 పెట్టాం, 5 రూపాయలకే భోజనం, బ్రేక్ఫాస్ట్ 5 రూపాయలకే, మధ్యాహ్నం 5 రూపాయలే, 3 పూట్ల భోజనం చేసినా 15 రూపాయలతో భోజనం పెట్టే ప్రభుత్వం ఎక్కడన్నా దొరుకుతుందా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. పేదవాడికి అండగా ఉండాలి. అందుకే నాణ్యమైనటువంటి పౌష్టికాహారాన్ని మనం ఈరోజు అందజేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. దీనివల్ల జీవన ప్రమాణాలు బాగా పెరుగుతాయని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ రోజు ఈ గ్రామానికి వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు మా వాళ్ళని అడిగాను, చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేశారు కానీ ఇంకా స్కిల్స్ గురించి సెన్సస్ చేయలేకపోయారు. ఈ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళందరి నైపుణ్యం తీసుకొని అవసరమైతే మీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి నైపుణ్యాన్ని పెంచి మీకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి శ్రీకారం చుడతాం. డిసెంబర్ లోపల స్కిల్ సెన్సస్ కూడా చేసి తద్వారా మీ ఆదాయాన్ని, ఉపాధిని పెంచే అవకాశాలు మెరుగుపరుస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇప్పుడే మీరు చూశారు ఇసుక, నేను ఉచితంగా ఇస్తానని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, మీ ఊరికి దగ్గరే ఎక్కడ నది ఉన్నా లేకుండా వాగున్నా నేరుగా పోయి ఇసుక తెచ్చుకోండి. ఎవ్వరు అడిగేదానికి వీలు లేదు. కలెక్టర్ ముందరనే చెప్తున్నా, మీకు మీ అవసరమైతే మీరు తెచ్చుకోండి. కానీ తవ్వేటప్పుడు మాత్రం ఒక పద్ధతి ప్రకారం తవ్వండి. మరీ ఎక్కువ ఇసుక తీసేస్తే భూగర్భ జలాలు ఇంకిపోతాయి. ఆ ప్రాంతంలో ఎట్లా మీ దగ్గర నీళ్లు కూడా సరిగా లేవు, అన్ని ఉప్పు నీళ్లే. దాన్ని కూడా ఆలోచిస్తున్నా, సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్నా. ఈ గ్రామం నాకు ఒక సవాలుగా తీసుకుంటా. కలెక్టర్ కూడా చెప్తున్నా, అవసరమైతే అంద్రి నీవా నుంచి నేరుగా నీళ్లు తీసుకుని మైక్రో ఇరిగేషన్ పెట్టి ఏదైతే బిందు సేద్యం ద్వారా మీ పొలాలకు నీళ్లిచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటా ఒక ప్రాజెక్టు తయారు చేస్తాం. తద్వారా ఈ ఊర్లో
మంచి ఉపాధి కల్పించడానికి ముందుకు పోతాం. ఉచిత ఇసుక వర్షాకాలం వచ్చింది, ఎక్కడా దొరకని పరిస్థితి క్రియేట్ చేశారు. అధికార యంత్రాంగానికి స్పష్టంగా చెప్పాను, 15 లోపల ఫైనలైజ్ చేయాలి. ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మీరు ఉచితంగా ఇసుక తీసుకుపోయే విధానానికి శ్రీకారం చుట్టామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇది కూడా ఇంకొక 10 రోజుల్లో దీన్ని కూడా స్టెబిలైజ్ చేస్తాం. అక్కడి నుంచి ఎవ్వరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఇసుక ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. During his Prayashchit Diksha or the Atonement Diksha, Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan has highlighted the ongoing desecration of the temples over the past 5 to 6 years, noting that around 219 temples have been affected so far, including the vandalism of Lord Ram's statue in Ram Tirtham. He emphasized that this initiative is not solely about a single issue, but is a commitment to advancing the Sanatan Dharma or the Hindu Dharma Pati Rakshana Trust. He stated that such incidents need to be addressed effectively and announced that he would make a declaration following the Diksha. Thank you. Okay. Sir, in a short time you are going to conclude the Prayashchit Diksha, and how do you react on this? No, this Prayashchit Diksha is some kind of desecration. Continuously, it's happening for the last few years, last 5-6 years, and around 219 temples were desecrated. And in Ramatirtha, Lord Rama's statue was head was chopped off. So this is not just about one prasad issue today. Maybe it came out. Maybe this was the triggering point to initiate all this. This Prayashchit Diksha is the commitment to take forward the Sanatana Dharma Parirakshana Board is very essential. That is the order of the day. This kind of occurrences, any kind of desecration to temples and such kind of occurrences should be stopped and should be addressed differently, at a different level. And all this, keeping all this in my mind, and I think that's what I initiated this Diksha. This is going to be, I think, 10th day. Once I'm done with this, tomorrow we're going to have a declaration, day after, what we are going ahead, what we are looking at. It is not just about Diksha, it's not just about saying something and we're forgetting it. There should be some kind of permanent measure to this, or some permanent addressing mechanism to it. I think that's what we're going to unleash. That's what the roadmap which we would like to set on day after tomorrow. Sir, would you like to respond on this SS comments on yesterday and the issue, sir? I think they said in such a way it was they never said it was not adulterated. Maybe whatever information they have on their hands, I think they commented on that, and the Honorable Supreme Court judges said it was. They didn't say it was unadulterated. They said regarding the date there was a confusion which will be cleared, and that is one aspect. But it's later. I think our government will take it forward. Like what kind of violations happened in the last 5 years? It's not just about a prasad issue. Thank you, sir. ఫ్రేమ్ బాగా వచ్చిందా? చాలా థ్యాంక్స్ సార్. నారా లోకేష్ గారికి కూడా అందజేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్
Well, that brings us to the close of this edition of Primetime News Hour with me, Anukriti Sharma. Keep watching CVR English for more news and updates.